Hello friends, welcome to Ekdant Environment Education. As I have told to you that shortly we are going to start a lecture on environmental engineering which will be very much useful for your GATE exams, UGC exams and all the state public service commission examinations. Okay. Environmental engineering itself uh, have a much more weightage in all the examinations. Okay. So having the command on this subject really makes a more advantage to score a good marks in the exams. Okay, so without wasting much more time in these things, let's start the lecture. Today we are going to start the lecture from water supply engineering. First of all, we will be completing the lectures on water supply engineering, and on the later on we will covering the wastewater engineering. Okay, so starting with the water supply engineering, today we are going to see the topics like water demand, various types of water demand, per capita demand, factors affecting the per capita demand, factors affecting the losses and the waste, variation in the demand and its assessment. Okay, from exam point of view, from these topics 2 to 3 questions always come in the examinations. Okay, 2 to 3 questions from the water demand, like what will be the fire demand, how to calculate the fire demand. Okay, what is the per capita, what is the per capita demand of a industry. Okay, so service wise, so these questions all related to these topics. So from the exam point of view, 2 to 3 questions always asked from these topics. So let's see the topic in detail, starting with the first one, water demand. What is water demand? Whatever the requirement of water for our daily purpose, for the industries, for the commercial establishments, in the institutions. Example, like if we are in the house, we need a water for gardening, bathing, cooking, and washing the utensils. So these are all are what? Domestic demand. Okay. So likewise, there are many demands. We will see one by one. So for a civil engineer to design a water supply scheme for a community, he requires two things. That first one is the water demand. What is the demand of a water for a community? And the second one is the source of water, to fulfill that demand. Okay, what will be the source of water, how much availability of water is there, so that we whether we can fulfill the demand of the community or not. So these two things should be kept in a mind while designing a water supply scheme. Okay, moving ahead, apart from these two things, there are other quantities also that require to be assessed and recorded while planning a water supply scheme. Okay, like the total annual volume in liters and million liters, annual average draft in liters per day, how much liters of water required per day, how much liters of water required per day by per person. Okay, by per service, how much water required per day. Okay, and what will be the fluctuations in the flow. These all points also should be kept in mind while designing a water supply scheme. Okay, so it's very much important for a civil engineer that while designing a water supply scheme, he must keep these all things in his mind so that the water demand can be fulfilled easily. Okay, next, there are various types of water demand. Okay, which all constitute to calculate the per capita demand. Means एक व्यक्ति को एक दिन में कितने लीटर्स पानी की ज़रूरत होती है ना, और किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, तो ये सभी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी होती है, सो डैट टू कैलकुलेट द वाटर डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी. अगर हम एक पर्सन का वाटर डिमांड या पर कैपिटा डिमांड हम निकाल लेते हैं, तो हम पूरे पॉपुलेशन का निकालेंगे और उस बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन की क्या डिमांड है, और हम एक पॉपुलेशन फोरकास्ट करके हम फ्यूचर, है ना, 1 डिकेड 2 डिकेड्स का हम फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करके पॉपुलेशन क्या होगा उसके हिसाब से हम एस्टिमेट करके हम एक डिमांड को, फ्यूचर डिमांड्स को भी फुलफिल कर सके, उस हिसाब से हम एक वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करते हैं. ठीक है,
So to design the water supply schemes, various water demands are to be kept in our mind. Like the first one is the domestic water demand, industrial water demand, institutional and commercial water demand, demand for the public uses, fire demand, and the water required to compensate the losses in the theft and the waste. Okay, so let's see the demands one by one. So very first one is the domestic water demand. Domestic water demands includes the water which required for the domestic purposes like drinking, cooking, bathing, gardening, sanitary purpose, and etc. Okay. As per IS 1172 1993, the minimum domestic consumption for a town or a city should be 200 liters per head per day. मिनिमम डोमेस्टिक कंजम्पशन एक सिटी में कितना होना चाहिए? तो 200 लीटर्स पर पर्सन पर डे according to IS code 1172. Okay, remember this figure. For the economically weaker section and LIG colonies, the domestic water consumption reduces to 135 liters per person per day. Okay, and this domestic water demand, total domestic water consumptions compared with the total water consumptions. अगर हम total water consumptions में से सिर्फ domestic water consumptions को हम देखें तो 50 to 60% जो टोटल वाटर कंजम्पशन है उसमें से 50 to 60% सिर्फ डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन में ही यूज हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज द total domestic water consumptions related to the total water consumptions. So it is what 50 to 60%. Okay, so make sure this points also. Figures is very much important. Here is the breakup of the domestic water supply for of Indian towns and cities with a full flushing system. Okay, so you can see that here for drinking purpose 5 liters per head per day. We are all कैलकुलेटिंग पर डे पर पर्सन. एक व्यक्ति को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत होती है इन लीटर्स. सो दैट इज ब्रेकअप हियर. यू कैन सी हियर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस 5 liters, cooking purpose 5 liters, bathing 75, washing of the clothes 25, washing of utensils 15, washing and the cleaning of houses and the residence 15 liters, watering in the lawn and gardening 15 liters, flushing of the water closets etc 45 liters. So making the sum of all these we get 200 liters per day per person. Okay, एक व्यक्ति को 200 लीटर्स पानी की जरूरत होती है. नेक्स्ट the industrial water demand. Next is the industrial water demand. ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज है, अगर उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना. जैसे कि प्रोसेसिंग हो गया, देन वॉशिंग हो गया. ओके, मैन्युफैक्चरिंग्स में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. कोई भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना होता है तो उस सेटअप करने से पहले एक एनवायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत होती है. तो उस क्लियरेंस के अंदर कंपनी को ऑपरेट उसको शुरू करने से पहले उनको बताना पड़ता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर या प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कितना पानी की ज़रूरत है. सो वी हैव टू शो द वाटर बैलेंस, है ना, कि हम वाटर बैलेंस शो करते हैं कि हमको इतने पानी की ज़रूरत है. सो दिस डिमांड वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज. टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के हिसाब से उसकी जो वाटर डिमांड है वो चेंज हो जाती है ना. अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको कम ज़रूरत पड़ेगी, टेक्सटाइल है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. ओके, then if it is a steel industry, it requires different amount of water. So these water demand varies from the type of industries. Okay, so let's see it. One more question asked from this, that what will be the water demand of a steel industry, or what will be the water demand for a leather industry or automobile industries. Okay, so these are the questions from this topic. Okay, so industrial water demand, it is the demand required by the industries which are either existing or are likely to be started in future in the city. Okay, हम दोनों बातों का ध्यान रखते हैं कि एग्जिस्टिंग में कितने इंडस्ट्रीज हैं और इन फ्यूचर इस सिटी के अंदर कितने इंडस्ट्रीज आने वाले हैं.
है ना, क्योंकि हमें पता होता है, हमने जोनिंग करके रखा है, हमारे पास कितने प्लॉट्स है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ इतने प्लॉटिंग अभी एम्प्टी है, मतलब इतने प्लॉट्स अभी खाली हैं, तो इतने में अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी, तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का हम अगर सोचे कि अगर सपोज इस टाइप की इंडस्ट्रीज आ रही है तो उसका कितना डिमांड होता है एक दिन का एक पर्सन के हिसाब से, तो फिर अगर वो छोटी स्केल की इंडस्ट्रीज आती है वहाँ पर एज पर द लैंड, तो उसका मिनिमम इतना वाटर डिमांड होना चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से वो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर इंडस्ट्री जो भी आने वाली है सिटी के अंदर, उसके हिसाब से आप इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। ओके, इफ द सिटी इज ऑफ मैक्सिमम कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, तो उसका क्या होगा, वाटर डिमांड जो है पर कैपिटा वाटर डिमांड उस सिटी का बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं per capita water demand for a cities, industrial cities having how much value, 450 liters per head per day. Okay, and if it is a normal industry, for normal industries it is 50 liters per head per day. Okay, so this figure is important, and let's see the breakup of water demand of certain important industries, okay, which is very much important for the exam point of view. So here you can see that automobile industry, distillery, alcohol, fertilizer, leather, paper, special quality paper, straw board, petroleum refinery, steel, sugar and textile. Okay, so these are the type of industries. You can see all the industries having a different purposes. Okay, based on their manufacturing, processing and productions, they are distinguished. Okay, then the unit of production on the what type of industry, say for example it's a automobile, so automobile will not be producing its production in tons or kiloliters, it will be producing its production in units, how much vehicles has been produced. Okay, so unit is very much important, that we also called as a service. So automobile unit of production is vehicle. Similarly for different industries, you can see over here, that for different industries there is a different unit of productions. Okay, so this is also important. Apart from this, how much per capita water demand will be there for unit production, you can see over here. Okay, the last column. So for exam point of view, this is very much important things, so try to learn it. Okay, ऑटोमोबाइल 40 लीटर्स पर व्हीकल, एक व्हीकल के पीछे 40 लीटर्स पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। डिस्टिलरी होगा तो 122 से 170। फॉर फर्टिलाइजर इट रेंजेस फ्रॉम 80 लीटर्स टू 200 लीटर्स। ओके, मैनी टाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री को कितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है, टेक्सटाइल को कितनी ज़रूरत पड़ती है ना। टेक्सटाइल को आप इमेजिन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसकी डिमांड कितनी है, 80 से 140 के रेंज में होती है ना। तो ये एक होता है कि हम सोचते हैं कि टेक्सटाइल नाम सुन के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन नहीं, उसको कितनी ज़रूरत पड़ती है, 80 टू 140। अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर बहुत छोटी है, छोटे स्केल पे है, तो उसको कम लगेगी। अगर वो बहुत ही बड़ी वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियसली एक यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो जितना लग रहा है उसका अगर यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली उसका वाटर डिमांड भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो इस हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड देयर पर कैपिटा डिमांड। ओके, सो ट्राई टू लर्न दिस टेबल। नेक्स्ट, the third one is the institutional and commercial water demand. Institutionals like hospital, hotels, restaurants, school, colleges, railway stations, offices required have their requirement different water. Okay, they are having the water requirement of different liters. Okay, likewise hospital, hotels, schools, colleges, railway stations. Okay, this quantity vary from the nature of city. Okay, if you are having a smaller city, this there will be a much more vary in the water demand of these institutions or the commercial establishments. Okay, if the city is large metropolitan city, then this demand goes much higher to larger value. Okay, so types of commercial establishment, nature of the city and the institutions present in the city, all these factors are needed to analyze for institutional and the commercial water demands. So on an average, the per capita demand is 50 liters per person per day for a high commercial cities
and for a normal cities it goes to 20 liters per head per day. Okay, let's see the breakup of the water demand for institutional and commercial establishment. Okay, here you can see that for the different types of institutions and the commercial establishments, in the last column you can see the water consumptions in liters per head per day. Okay, so this is again a very much important from exam point of view. There may be chances that they ask the question that what will be the per capita demand of a hostel or a school or a hospital. Okay, so you can see over here also, you can see in the bracket they have written the unit like per bed. You can understand that hotels and the hospitals are denoted by bed, that this hospital is having 100 beds, 200 beds, 1000 beds, so their water demand also calculated on the basis of per bed. Okay, next, demand for the public use like watering of public parks, gardening, washing of roads, sprinkling on the roads, use in the public fountains, these are the public uses. So for this purpose also water is required. So this is normally comes out to be 10 liters per head per day. Okay, and the amount will not be more than 5% of the total water consumption. टोटल वाटर कंजम्पशन जो हो रहा है उसका 5% से भी कम ही रहेगा, 5% से ज़्यादा जाएगा ही नहीं पब्लिक यूज़ के लिए. ओके, सो ये याद रखना. नेक्स्ट, fire demand, very much important from the exam point of view, very much important. Fire demand, the quantity of water required for extinguishing the fire in a city of population 50 lakh is about 1 liters per head per day, but this water should be stored always in the reservoir. इतना पानी तो आपको हमेशा रिजर्वायर में स्टोर रखना ही है. कब इमरजेंसी आएगी वो कभी किसी को बता के नहीं आती, ठीक है ना. तो फायर अगर सिटी में हो रहा है तो आपके पास हमेशा इतना पॉपुलेशन के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से एक दिन का 1 लीटर पानी आपको बचा के रखना ही है ना. नाउ देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर टू बी कैप्ट इन अ माइंड दैट what will be the minimum water pressure. Okay, so the minimum water pressure will be 100 to 150 kilonewton per meter square. This will be the minimum water pressure, and it should be continuously supplying water for 4 to 5 hours. You must have the capacity of the reservoir. रिजर्वायर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली इतने मिनिमम प्रेशर पे वो पानी को सप्लाई कर पाए, ठीक है ना, आग को बुझा पाए, ठीक है. और अगर हम वाटर हेड की बात करें तो वो 10 to 15 मीटर का उसका वाटर हेड का होना चाहिए, ठीक है. या तो आप मिनिमम वाटर प्रेशर याद रख लो और वाटर हेड भी याद रख लेना, ठीक है ना. ये मिनिमम आवर्स तो मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन ये मिनिमम वाटर प्रेशर पे ही आता है. देन द डिस्चार्ज ऑफ द जेट स्ट्रीम शुड बी 1100 लीटर्स पर मिनट. एक मिनट में इतने 1000 लीटर्स डिस्चार्ज होने चाहिए जेट स्ट्रीम से. देर आर टोटल 3 जेट स्ट्रीम्स, है ना. 3 जेट स्ट्रीम होता है, एक जो डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है और एक बाकी के 2 जो साइड में होते हैं वो साइड वाले एडजेसेंट बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा फायर स्प्रेड ना हो, ठीक है. सो द नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. सो दिस इज अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन. यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्या आएगा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जेट स्ट्रीम. आप जेट स्ट्रीम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो जेट स्ट्रीम शुड बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 2.8 अंडर रूट P. ओके, आप इस बेसिस पे फॉर्मूला से नंबर ऑफ जेट्स कितने रिक्वायर्ड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट, हियर देर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज. ओके, कितना डिस्चार्ज होना चाहिए वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो बाय दीज आर दी फार्मूलाज. 4 फार्मूलाज यू कैन सी. ओके, बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर, है ना. और एग्जाम्स में इसमें से कोई एक फार्मूलाज या पूछ लेते हैं, या तो कुछ लिंक्स फार्मूला हो गया, फ्रीमैन हो गया, बस्टन्स फार्मूला हो गया, है ना. ज़्यादातर ये फार्मूला से पूछते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो ये वाला याद रखना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला, दैट Q इज इक्वल टू दिस वन.
ओके, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो ये चीज़ ध्यान रखना. सो आई हैव टेकन दिस क्लिपिंग्स फ्रॉम दी एसके गर्ग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, एसके गर्ग वॉल्यूम 1, वहाँ से मैंने ये क्लिपिंग ली है ना फार्मूलाज की डायरेक्टली. तो आप देख सकते हैं कि पहला फार्मूला क्या है, कुचलिंग्स फार्मूला. इट स्टेट्स दैट Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट P. ओके, P will be the population and it will be in thousands. Okay, and the discharge will be the amount of water required, that will be in liters per minute. Okay, the next one is your Freeman's formula. Okay, you can see over here that Q is equal to 1136 bracket में population divided by 10 plus 10 whole bracket close. Okay, and then नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये फार्मूला हमेशा क्वेश्चन इसके ऊपर से आता ही आता है. ये हो गया कुछ लिंक्स का हो गया, और ये बस्टन्स फार्मूला है. ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना और हमेशा इसको याद करके ही जाना. ठीक है ना. 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि इसको हाउ कैलकुलेट द डिस्चार्ज और अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस मच पॉपुलेशन. एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं पॉपुलेशन की रेंज भी दी हुई है ना. when the population is less than or equal to 2 lakh, then you can use the formula this Q is equal to 4637 under root P. Okay, this formula you can use. And if the population is more than 2 lakh, a provision for 54,600 liters per minute may be added with an extra additional provisions of this much liters for a second fire. है ना. अगर इससे पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है तो हम इस वैल्यू पे हम इतना वैल्यू और ऐड कर देंगे. ओके, क्यू से जो भी वैल्यू निकलेगा उसके ऊपर उसके ऊपर हम उसको ऐड कर देंगे. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज योर बस्टन्स फार्मूला. इट इज स्टेट्स दैट Q is equal to 5663 under root P. Again P will be in thousands. Okay, so these are the formulas which is very much important from exam point of view. In GATE also they may ask the question that calculate the amount of water required for the fire demand, and the population will be given and you have to use this formula. Okay, next, water required to compensate the losses in the waste and the theft. There are many waste and the theft, okay, taking place in a city. So you have to calculate the water demand to compensate the losses in these things also. Okay, so water lost or get waste due to leakage in the pipes, damaged meter, unauthorized water connections, and other losses and waste should also be considered by calculating the water demand of a community. Okay, these losses in a waste and theft accounts for as high as 15% of the total water consumptions, which is approximately 55 liters per head per day. है ना. आप देख सकते हैं कि जो टोटल परसेंटेज के हिसाब से जो वाटर रिक्वायर्ड है लॉसेस टू कंपेंसेट द लॉसेस इन वेस्ट एंड थेफ्ट वो कितना है 15% ऑफ द टोटल वाटर कंजम्पशन है ना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट, व्हाट इज पर कैपिटा डिमांड. पर कैपिटा डिमांड इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रिक्वायर्ड फॉर community. Okay, it is the annual average amount of daily water required by one person and includes the domestic use, industrial use, commercial use, public use, waste and theft, all the demands. By considering all the demand, we are calculating the per capita demand. Okay, per capita demand in liters per head is calculated as the total yearly water requirement of a city in liters divided by 365 days into the design population. Okay, to calculate the total yearly water requirement of a city, you have to calculate the population. Okay, you need the value of population. Okay, so by this, if you know the amount of water, say for example you are having 2 lakhs liters of water. Okay, and for 1 year 365 days, if and you, the city has a population of say for example 10,000, smaller city 10,000 लोग रहते हैं, आपके पास 2 लाख
लीटर पानी है और उसको 1 साल तक चलाना है, तो आप एक आदमी को कितना पानी दोगे? तो आप पर कैपिटा डिमांड वही बोलता है कि आप एक आदमी को कितना पानी सप्लाई करोगे ईयरली, 1 साल के अंदर, है ना। तो per capita demand calculated by this formula, that total yearly water requirement of a city in liters divided by 365 into the design population. Okay, next you can see over here the breakup of the per capita demand for an average Indian city. डोमेस्टिक यूज में हमने देखा 200 था, इंडस्ट्रियल में 50, कमर्शियल यूज 20, पब्लिक में 10 एंड वेस्ट एंड थेफ्ट में 55 लीटर्स. सो ओवरऑल द पर कैपिटा डिमांड फॉर एन एवरेज इंडियन सिटी इज 335 लीटर्स पर हेड पर डे. एक दिन में 335 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर हम सभी चीज़ को कैलकुलेट करें तो. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड? किस कारण से पर कैपिटा डिमांड को प्रॉब्लम हो सकता है या हम कैलकुलेट बराबर नहीं कर सकते हैं? अगर ये सब चीज़ बातों का ध्यान रखेंगे तो हम इजीली पर कैपिटा डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि साइज ऑफ द सिटी, बड़ी सिटी है, छोटी सिटी, अगर बड़ी सिटी है तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा आपका, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ा हो जाएगा. सो द साइज ऑफ दिस सिटी अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड. क्लाइमेट कंडीशन, ऑब्वियसली अगर बहुत ही हॉटर एंड ड्राई प्लेस है तो उसका कंजम्पशन वाटर का क्या होगा, बढ़ जाएगा. फॉर बाथिंग, क्लीनिंग, एयर कूलिंग, स्प्रिंकलिंग इन द लॉन्स, गार्डन्स, है ना, सभी पर्पस के लिए क्या हो जाएगा, आपका वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा. सिमिलरली अगर हम कोल्ड कंट्रीज की बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, कंजम्पशन का बहुत ही कम हो जाता है ना. पीपल मे कीप दैट टैप्स ओपन टू अवॉइड द फ्रीजिंग ऑफ pipes and there may be more leakage from their pipe joints since the metal contracts with the cold, है ना. तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आप कोल्ड कंट्रीज में भी उनका पानी फ्रीज ना हो जाए, तो उस चक्कर में भी वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पानी को वेस्ट करते रहते हैं. तो दिस इज अगेन क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या हो रहा है, पर कैपिटा डिमांड जो हम एग्जैक्टली सोचे थे कि हम एक पर्सन के हिसाब से इतना लग रहा है लेकिन उससे ज़्यादा ही जा रहा है ना. सो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड. हैबिट्स ऑफ द पीपल, ऑब्वियसली अगर आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है तो आपका पर कैपिटा डिमांड भी बढ़ जाएगा. ओके, देन कम्स द इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज़. बड़ी सिटीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगा. ओके, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई. अगर आप बहुत अच्छा पानी सप्लाई कर रहे हैं पीने के लिए या सभी चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पानी सप्लाई करेंगे तो अदर सोर्स ऑफ वाटर से क्या होगा, पानी का एक्सट्रैक्शन कम हो जाएगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कौन करेंगे, सभी लोग वाटर सप्लाई जो हम दे रहे हैं, है ना, वाटर सप्लाई स्कीम से सब उस पानी को यूज़ करेंगे. तो ऑब्वियसली द पर कैपिटा डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अगर आप सेकेंड फ्लोर तक पानी पहुंचा रहे हैं मिनिमम प्रेशर से, अगर आप उसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर तक जाएगा. तो सब लोग क्या करेंगे, सब लोग वाटर सप्लाई जो आप कर रहे हैं हाई प्रेशर पे वो पानी को ही यूज़ करेंगे. तो ऑब्वियसली आपका क्या हो गया, बढ़ गया पर कैपिटा डिमांड, है ना. नहीं तो क्या होता, नीचे रहता, अगर उनके पास लिमिटेड स्टॉक रहता तो ऊपर के फ्लोर वाले जो रहते वो लिमिटेड पानी यूज़ कर पाते, ठीक है. तो प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड. नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ द सीवरेज फैसिलिटी. अगर आपका फ्लशिंग फुल फ्लशिंग सिस्टम सिटी का बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, सीवरेज फैसिलिटीज़ है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे फ्लशिंग सिस्टम में, है ना. अगर आपका बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम है टॉयलेट्स का तो फिर उसमें क्या होगा, कम पानी यूज़ होगा, है कि नहीं. और अगर सीवरेज सिस्टम बराबर नहीं है तो क्या होगा, ज़्यादा अगर फ्लडिंग बाहर साइड पे होगा तो उसको रोकने के लिए लोग सोचेंगे कि हम पानी कम यूज़ करें सो डैट बाहर फ्लडिंग उसका ना हो, है ना. सो डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम और सीवरेज फैसिलिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड, वो भी बढ़ा देता है. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ वाटर. अगर आपके यहाँ मीटर सिस्टम है, अगर आप वाटर टैक्स ले रहे हैं तो लोग सोच समझ के उसका पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. अगर आप पानी के लिए आप मंथली कोई अमाउंट फिक्स कर दो कि हम मंथली इतना लेंगे वाटर चार्ज, तो भी लोग क्या करेंगे, उसको बहुत जुडिशली यूज़ करेंगे पानी को. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड. नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ सप्लाई. अगर आप 24 आवर्स देंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे पानी. अगर आप इंटरमिटेंट कर देंगे सप्लाई को तो क्या होगा, इंटरमिटेंट सप्लाई में वो बहुत ही जुडिशली उसको यूज़ करेंगे. तो सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑल्सो अफेक्ट्स द पर कैपिटा डिमांड. नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड द मेथड ऑफ चार्जिंग.
अगर मीटर सिस्टम रहेगा तो बहुत ही किफ़ायती से सब लोग यूज़ करेंगे, नहीं तो मीटर का बिल ज़्यादा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, देर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द लॉसेज एंड द वेस्ट। ऑब्वियसली अगर आपके जॉइंट्स प्रॉपर नहीं है तो आपका ज़्यादा लॉसेज होगा, है ना। देन कम्स द प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ज़्यादा प्रेशर रहेगा, कहीं से अगर फूट गया या पाइप टूट गया तो उसके चक्कर में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ सप्लाई, एज वी हैव सीन दैट कंटिन्यूस सप्लाई ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा लॉसेज और वेस्टेज में। देन कम्स मीटरिंग सिस्टम। मीटरिंग सिस्टम रहेगा तो ऑब्वियसली इसको कंट्रोल में रखेगा, है ना, लॉसेज और वेस्ट को। नेक्स्ट इज अनऑथराइज्ड कनेक्शन। अगर आपका कनेक्शन लीगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपको पता ही है कि अनऑथराइज कनेक्शंस तो होते ही होते हैं हर एक चीज़ में। आप इलेक्ट्रिसिटी में देख लो या तो फिर वाटर में देख लो, पानी में भी लोग अनऑथराइज कनेक्शन करते ही करते हैं। तो उसके चक्कर में भी आप जो डिमांड कैलकुलेट किए हैं एज पर ऑल दी पैरामीटर्स, वो सेट नहीं हो पाएगा और फिर आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे सिटी के डिमांड्स को। ओके, द लास्ट वन, वेरिएशन इन द डिमांड्स। there are many variations in the water demand like seasonal variation, monthly variation, daily variations, hourly variations. What is variations? Variations mean the fluctuations. आपका variations mean water demand बदलता रहता है, सीजन टू सीजन आपका डिमांड बढ़ जाएगा घट जाएगा। डेली टू डेली मीन्स आपका किसी दिन फेस्टिवल सीजन रहेगा तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होगा, है ना। दिवाली में हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं धोने के लिए, वो सब करने के लिए, वॉशिंग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम आवरली। आवरली वेरिएशंस में आपको पता है पीक आवर्स होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, उस समय हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। एट द नाइट और आफ्टरनून में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की। सो दीज आर ऑल व्हाट, सीजनल वेरिएशंस, डेली वेरिएशंस एंड hourly variations. Okay, next, these normal variations in the demand should be generally assessed and known in order to design the supply pipes, service reservoirs and distributory pipes. ये सब वेरिएशंस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? सो डैट जो हम आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो वाटर सप्लाई है, पाइपलाइंस है, वो है, रिजर्वायर है, डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप्स है, सप्लाई पाइप्स है, ये सब का हम डिज़ाइन प्रॉपरली कर पाए, इसके लिए हमें ये सब वेरिएशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, assessments of the variations. So these are the very much important formulas to be remembered for calculating the maximum daily demand, maximum hourly demand. Okay, always 1 to 2 questions asked from this topic, assessment of variations, very much important. So first one is the maximum daily demand. It is considered as 180% of the average daily consumption. Okay, what is average daily consumption? Average daily consumption is nothing but your per capita demand. Okay, so the formula to calculate the maximum daily demand is 1.8 into average daily demand. Okay, next, maximum hourly demand is taken as, this was the maximum daily demand, this is the maximum hourly demand. It is how much? It is 150%. Okay, remember this percentage only, this will make the all formulas. Okay, 180, 150, maximum hourly demand is 150% of the average hourly demand. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज आवरली कंजम्पशन है, यहाँ डेली था तो डेली को हम आवरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेली हो गया 1, तो आवरली में कन्वर्ट करना है तो 1/24 कर देंगे, राइट। तो आपका डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? आपका मिल जाएगा आवरली कंजम्पशन, है ना। और जो फार्मूला ऊपर था उस फार्मूला में हम ये वाला ऐड कर देंगे तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा। सो द फार्मूला बिकम्स व्हाट, 1.5 एवरेज आवरली कंजम्पशन ऑफ द मैक्सिमम डे। सो 1.5 मैक्सिमम डेली डिमांड जो था आपका, ये वाला फार्मूला, उसको हम डिवाइड बाय 24 कर देंगे तो एवरेज आवरली कंजम्पशन ऑफ द मैक्सिमम डे, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डे का आवरली कंजम्पशन कितना है तो वो हम इससे कैलकुलेट हो जाएगा डिवाइड बाय 24 से। और मैक्सिमम आवरली डिमांड कैलकुलेट करना है तो उसमें हम 150% को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द फाइनल विल बी व्हाट, 2.7. this is the important also. Okay, how much is the maximum hourly demand? So our maximum hourly demand is how much? 2.7. Okay, moving to the, so this was 2, and the third one is maximum weekly demand is 148% of the average weekly consumption. So this is the formula, maximum weekly demand is 1.48 into average weekly demand,
and the last one is maximum monthly demand is taken as 128% of the average monthly consumption. Okay, so these are the four formulas, very much important: MDD, MHD, MWD and MMND. Okay, these are the four formulas very much important for the exam point of view. So friends, if you really enjoyed the lecture, so please like it, share it, and subscribe the channels. Okay friend, and last one is your assessment of variation by Goodrich formula. Goodrich has given the formula to calculate the annual average draft for a time t, and the formula is P is equal to how much? You can see over here, P is your P is equal to 180 into T raised to minus this much. Okay, minus 0.10 means P is equal to 180 into, okay, this is 180 into T upon minus 0.10. Okay, this will be the formula of the Goodrich. Very much important. In the gate also may comes the question that how to calculate the annual average draft using the Goodrich formula. So the parameters will be given, time will be given, and you have to calculate the annual average draft. Okay, so thanks for watching the Ekdant Environment Education, friends, and please like the video, subscribe the channel, and press the bell icon to get notified of all the new videos related to the exams and updates. Okay friends, thank you so much.